हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एट योर होम। ज़्यादा कुछ ना बोलता डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। आज मैंने एक लॉकडाउन शूट प्लान करा है घर की सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। अनप्लान शूट है, बिल्कुल सारा रैंडम कैंडिडेट जो भी आप बोलते हो स्पॉन्टेनियसली होगा सब कुछ जो। चलिए शूट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ही इज़ माई फ्रेंड अमित। आज हम इन्हीं का शूट करने वाले हैं। और सबसे पहला शॉट मैंने यहाँ पे प्लान करा। पीछे वाइट वॉल है, हमारे सामने से लाइट पड़ रही है, तो इस वॉल को हम एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे। चलिए ट्राई करते क्या होता है। तो गाइस, वाइट वॉल के बाद सेकंड अपना प्रोप रहेगा ये ब्लैक सीडी। वाइट वॉल और ब्लैक सीडी के साथ में हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में शूट करेंगे। Let's see how it goes with it. तो सब होने के बाद आखिरी के कुछ शॉट्स हम कमरे के अंदर ही लेंगे। इसके लिए हम विंडो लाइट का यूज़ करेंगे। ज़्यादा तो ये टेक्निक ऐसा फोटोग्राफी में यूज़ होती है, पर आप पोर्ट्रेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो ही खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, जिससे आगे भी हम ऐसे वीडियोस ला सकें आपके लिए। ओवर टू यू ब्रो। बहुत ही कर्रा वीडियो बनाया भाई ने, मतलब गजब मज़े आ गया। और शूट में तो और भी मज़ा आया। बस धूप बहुत ही खतरनाक वाली धूप पड़ रही है, और मैं तो मतलब वो एक्टर लोग का सोच रहा हूँ यार, क्या धूप में एकदम वीडियो बनाते रहते, पिक्चर बनाते, एकदम खतरनाक काम है। सल्यूट ब्रो। जो यूज़ करता हुआ तो
तो बिना किसी बकचोदी के नहीं है नहीं बोलता। अरे यार मैं वही बोल रहा था, तेरे हाथ नहीं चेट रहे, यूं कर रहे बैठा आराम से।